Hi. Hello, everybody. Good evening. It is so nice to see you again. How are we doing today? Hi. What's up? Hi. Hi, Shavik. Hi. Hi, Katie Trivedi. Hello. So actually, I was going through some psychology facts about human behavior, and because I know हम लोग अभी dating game से एकदम बाहर हैं, we are not interacting with people, but there are some facts that surprises me immensely. आपको पता है, आप किसी के shoes देख करके आप उनकी personality type पता कर सकते हो बहुत ही आसानी से. So usually those who are very नर्वस, जो नर्वस लोग होते हैं ना, उनके जूते हमेशा एकदम न्यू और क्लीन होते हैं. जो लोग बहुत काम होते हैं, शांत होते हैं, उनके शूज यू विल फाइंड वेरी अनकंफर्टेबल. वुमेन हु आर लाइक दे लुक वेरी वेरी काम, बट देन दे ऑलवेज वेयर हील्स. अगर आप एग्रेसिव हैं देन यू विल वेयर एंकल बूट्स. सो नोटिस करिए कि अगर आपके जो शूज हैं, द काइंड ऑफ योर फेवरेट शूज आर do they reflect your personality types. Similarly, overall appearance of a human being it tells a lot about a person. Hi. So when I say overall appearance, people who are very very polished, जिनका बाल एकदम पूरा प्रॉपर मैनेज होता है, जिनके आउटफिट एकदम प्रॉपरली आयन्ड होते हैं, डेफिनेटली नॉट मी, बट समवन हु इज वेरी वेरी पॉलिश्ड एंड वेल ड्रेस्ड, it's a sign of a person who focuses more on detail, and someone who is very practical in life and they observe every single thing. And other people who are like very casual in their appearance, जो बहुत ही casual कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स में या बर्मुडाज में या स्पोर्ट्स वेयर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, these are like a messy kind. And when I say messy, that also makes them very, very creative. These are the creative people, which is why you'll see a lot of directors in our industry, a lot of directors, ADs, actors as well. They wear very, very casual and comfortable clothes even when they are traveling or when they are going out just for grocery shopping or normal getaways. So yeah, and one very very extremely interesting fact about psychology, that अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, then also you can always do this thing with someone you like, and that's called mirroring. Mirroring is one sure shot body language trait, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने वाली बंदी या बंदा, अगर आप डेट पर हैं या फिर अगर आप किसी बॉस के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके बॉस का या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का बॉडी लैंग्वेज कॉपी करें. And when I say that, that means that अगर आपके बॉस ने आपसे बात करते करते, if he say he adjusted his hair ऐसे करके, then you also try and do that. If he's holding what do you say, legs अगर क्रॉस करके वो बैठे हैं आपके सामने में, then you also mimic him the same way. इससे क्या होता है कि सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको ज़्यादा लाइक करता है. और ऑल्सो द वन एंड ओनली way to make someone like you, I have been asked this question a lot of times, that they are going on a Tinder date, they are going on a Hinge date, so how can they have a lasting impression, how can they make someone like you? And I have read this all because I wanted to be that person who is like very very attractive to others and somebody who would connect instantly. So instant connection बनाने का दो तरीके हैं. पहली चीज़ ये कि आप किसी भी डेट में क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन जनरल नहीं होने चाहिए, विच मीन्स कि हम किसी से पार्टी में मिलते हैं, हाई लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कैसे हो आप. डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस. आई नो इट्स वेरी weird to ask anything apart from this, but then questions like, what is the best thing that you did today? Are you working on any of your dream projects right now? So I have a friend called Danesh Sheikh. He's a magician as well. So he was a human behavior analyst and dating coach, and he's like my age, and we used to talk immensely about dating world and how to impress a girl or how to impress a guy. So these are the questions that are like icebreakers and party starters. Second of all, let them talk more. जिसके भी साथ आप मिल रहे हैं उनको ज़्यादा बोलने दीजिए. अगर वो बात करना शुरू कर रहे हैं, आपने सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद बिल्कुल चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, लेट देम टॉक. और अगर आप चुप हो जाएंगे ना, देन दे विल टेंड टू स्पीक मच मोर एंड दे विल इंस्टेंटली लाइक यू. सी,
पूरी दुनिया में ना आपकी सबसे फेवरेट चीज पता है क्या है? आप खुद. Everybody is interested in themselves more than others. So the idea is, let them talk about themselves and you will be instantly more likable. Second of all, look at their feet. उनके पैरों का डायरेक्शन देखिए जब भी आप किसी से भी मिलें, be it your boss, be it your girlfriend, be it your friends. अगर आपको ये पता करना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, then look at their feet. उनके पैरों का डायरेक्शन किस तरफ है? अगर उनकी फीट और उनके शूज आपकी तरफ डायरेक्टेड है, which means they are interested in you and they are interested and they are buying the idea that you are selling. बहुत सारे entrepreneurs या फिर मैं भी इनफैक्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए जाती थी, like you know, for getting the investment done, I used to see this body language. I used to see leaning backward body language. I used to see that their toes are sometimes pointing towards me and sometimes they are pointing towards the direction of the gate. अगर किसी के पैर गेट की डायरेक्शन की तरफ है, एग्जिट की तरफ है, then obviously this means that they want to leave. They are not interested. और अगर कोई टेबल पे बैठा हुआ है, if they are touching their car keys, if they are touching their phone again and again, this shows disinterest, which means they are not very very interested in your company, or they are not very happy, or they are not enjoying, you know. So yeah, there are few things that you have to be aware of, because होता क्या है ना कि आपको लगता है कि डेट बहुत अच्छी जा रही है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप रीड नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, देन आपको गलत फहमियाँ हो जाती हैं आपके बारे में. सो इट कम्स वेरी वेरी हैंडी, यू नो. So yeah, be aware, start noticing body language of other people. And also one more information, जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, hi darling, hi Mahi, hi Tejab, hi Barilia. So I have to go quickly, I'm gonna wrap it up. जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर किसी का हैंडशेक बहुत ही सॉफ्ट और लाइट है ना, इसका मतलब ये है कि ये सबमिसिव टाइप के लोग हैं, इनको आप आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, इनको रूल कर सकते हो, इनको अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो. और चांसेस ये भी हैं कि ये लोग इंट्रोवर्ट्स हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है. इसको बोलते हैं डेड फिश हैंडशेक. ऑफिशियल्स जॉब में इस हैंडशेक की वजह से आपकी जॉब जा सकती है लिटरली, या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ योर हैंडशेक. आइडियल हैंडशेक. और अगर किसी का हैंडशेक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंट है ना, दीज आर द पीपल हु आर लीडर्स. They can actually, they're capable of lying, they are capable of manipulating you, they're capable of selling. So these kind of people are very good for marketing jobs, and someone who wants to manipulate someone in love and someone who wants to get laid. These guys, they get laid they get girls very easily because they know how to, you know, dominate someone and how to get someone psychologically. So yeah, have a firm handshake. And is baat ka you know, and one thing that also determines your relationship with them is the time duration. अगर कोई इंसान आपसे हैंडशेक मिला करके तुरंत हटा लेता है, like short handshake is an indication of disinterest. They are not really keen in knowing you better. They don't want to spend time with you. They are just doing it formally. ठीक है, या फिर out of obligation they are there. Second of all, if there is a warm handshake, you know, when you mean to touch somebody, because touch can tell a lot about a human being and about their intentions for you. If there's someone for a business proposal or in a meeting, if you come and you hug, there is a feeling of warmth, there is a feeling of, you know, real touch. That's a good one. That's something that you don't have to ignore. So yeah, that's it for today, guys. I'm gonna go now on the app and talk about libido in lockdown. So now this is about Kama Sutra. Kama Sutra में how you define isolation. ऐसा कहा जाता था कि जब राजा किसी जंग से लौट करके वापस आते थे, तो अपनी रानी के साथ कुछ टाइम सिर्फ आइसोलेशन में बिताते थे. उनसे कोई भी नहीं मिलता था, ना दिन में ना रात में. लॉकडाउन की सिचुएशन, if you see, is more or less similar to that. And how it has affected the sex life of couples, the couples that are staying together, is what I'm going to talk about on Anveshijan app. So yeah, if you want to know how couples are dealing with this and how the sex life is with people who are staying together, just tune in, because I know that interests you. And the facts are going to shock and surprise you. Trust me, it's not what you think it is. Mwah! I love you. I hope to see you. Ta-ta. Goodbye. See ya. Mwah! Ta-da. Bye. My cup size?
bigger than your mind and your dick. So fuck off.